इस वीडियो में हम आपको गैस लीकेज अलार्म फॉर होम सिक्योरिटी के बारे में बता रहे हैं। ये एक गैस लीकेज अलार्म है जिसको नॉर्मली माउंट करने के लिए इस तरीके से माउंट किया जाता है। और जब आप इस सेंसर को ऑन करते हैं तो ये पावर लाइट ऑन होती है और अलार्म लाइट ब्लिंक करती रहेगी। ये कुछ मिनटों से लेके आधे घंटे 1 घंटे तक भी ब्लिंक करती रह सकती है, जब तक कि ये नॉर्मल ना हो जाए और ये अपने आसपास के एनवायरनमेंट को सेंस करके ओके ना हो जाए, तब तक ये आपकी अलार्म लाइट ब्लिंक करेगी। और उसके बाद जब ये आपकी अलार्म लाइट ब्लिंक बंद हो जाएगी, आप इसको चाहे तो जैसे कि आपका गैस बर्नर के ऊपर गैस को ऑन करके विदाउट उसकी फ्लेम को ऑन किए नॉर्मल गैस ऑन करके जब ये गैस डिटेक्ट करेगा तो ये सायरन बजाएगा। इस तरीके से भी आप टेस्ट कर सकते हैं। और साइड में इसके ये टेस्ट का बटन दिया हुआ है, आप इस टेस्ट के बटन को दबाएंगे। जब आप इसको दबा के रखेंगे तो ये आपको अलार्म का बटन साउंड देगा। इस तरीके से आप टेस्ट कर सकते हैं इसकी साउंड को। और काफ़ी इजी टू यूज़ और इजी टू इंस्टॉल है। और ये इसके साथ ही एक वायर आती है जिसको आप नॉर्मली कहीं भी प्लग इन कर सकते हैं। और ये एलपीजी गैस डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। Hello, my friend. Please check. Firstly, you collect the solid wave wire to the detector. You see, the S1G2 is connected to the wire positive point, and the S1G1 is connected to the solid wave negative point. And when connect to the power, please wait about 2 minutes to preheat the gas detector and pull out the red cap to keep the solid wave to be open situation. Then when this light do not flash again, means that the preheat period have been finished. Now we can taste. Now we can taste. 拿着。Okay, we test again. We first pull out the red cap. Pull out the red cap. Please see clear. Okay, when it detects the gas leakage, it will automatically shut off the red cap. The red cap down, and that is the solid valve cut off. Now it is the home period of the test. Please check. If I have any questions, please ask me. Thank you. Okay. Okay.